स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी करते हैं। हाय पायल जी, हाय तृप्ति, हाय प्रोमिला, हाय मेल्टिंग हार्ट, हाय नेहा शाह, हाय श्वेता बजाज, हाय रुचिका, हाय कृपा जी, hi Bakers Abode, and hi Sumitra. So we'll wait for 2 or 3 minutes till more people can log in, and you can add in your friends and family who would want to learn the recipe. Acha Poonam ji, I should start with burger first. Okay, we can start with burger. I have no problem. We can start with burger. Hi Ketki, hi Surekha, hi Meenakshi. Hi Srishti, Om Namah Shivaya. Hi Anuradha. So guys, quickly add in your friends and family. So we are doing 2 recipes today instead of 1. One is going to be a Mexican bean burger and second is going to be a tzatziki dip. Tzatziki dip we had already taken it day before yesterday. It was an Instagram live. It was a collaboration with Chef Nandini, but due to some technical glitch my video was not that clear and audio was almost not there. So I am teaching that recipe again. I've shared the recipe card with you. Lavash we are not doing because already that was covered by Chef Nandini. We are doing tzatziki today and we are doing the Mexican bean burger. Okay. Hi Kriti, hi Santoshi, hi Ruby, hi Deepal, hi Rekha. So guys, we are going to do the burger first. एक तो वो लाल राजमा का पैकेट है और एक छन्नी भी दे दो। अच्छा एक चीज, before we do the dip we need to just put some salt on the cucumber, which I am going to do right now. तो वो रख के हम उसको छोड़ देंगे क्यूकम्बर का पानी निकलने के लिए। Add in your friends and family guys. Thank you Ankita and thank you Kripaji for all the help you are sharing in the group. You're sharing the link and the recipe card. I'm so thankful to you both. Hi Shalini ji. So guys, morning routine all done. Archana ji was your cooking, your sending off the children, the husbands, the exercise routine, everything. So now it's the time to learn a new recipe. Hi Gauri. सैलरी निकालो जो। Hi अंजलि गोयल। सब लोग कौन से सिटी से हैं? Who all are from Ahmedabad specifically? Hi Meenu Maheshwari. Anybody from Ahmedabad? So Ahmedabad people, we are going to start a series called Cooking with Moms. You're from Mumbai, Preeta ma'am. Hi Vaishali ma'am. I think Vaishali ma'am is also from Mumbai. Neha Shah. So guys, we are starting a series of Cooking with Mom, where I will be having some moms in the studio cooking live with me, teaching a recipe live with me. Okay, Bangalore, Ludhiana, Jalandhar. मीनू महेश्वरी फ्रॉम अहमदाबाद। मीनू जी आप आ सकते हो स्टूडियो में। नेहा शाह आप भी आ सकते हो। हाय प्रीति अग्रवाल फ्रॉम थाने, कोल्हापुर। तो आप जब भी अहमदाबाद विजिट करें, यू कैन लेट मी नो, वी कैन प्लान अ लाइव सेशन विद यू ऑल, जो भी यहाँ पे आके कुछ सिखाना चाहें। अरुणा फ्रॉम मुंबई। हाय अरुणा जी।
Hi Smita Mali, you're from Kolhapur. Add in more friends and family, guys. Ludhiana, I just love Punjab. Yes, Neha, you can connect with me on my personal number. I'm going to share my personal number with you all. Just save it. Just in case you need any help, you're traveling to Ahmedabad, you can let me know. And those of you who want to come to the studio, you can get in touch with me. Hi Deepika Jhawar. You're from Ahmedabad only. Manisha Sharma. I am staying in Thaltej. I'm in Thaltej. You can just connect with me on my personal number. I'm sharing that in the WhatsApp group right away. You can save it and you please get in touch with me personally. So I'll give you all the details. Hi Alka ji, you're from Delhi, Gurgaon. I'm born and brought up in Delhi. My daughter lives in Gurgaon. My daughter studies in Gurgaon. Anjali, you're also from Delhi. I am a Delhiite at heart, but I'm married in Ahmedabad. Commercial as in, can we do this as commercial? Just elaborate your point so that I know what you meant. Hi Vasu, homemade cakes. Melting Hearts, please quickly give me the, just elaborate your point. Neeta Shah from Mumbai. Trupti, you can come from Surat to Ahmedabad, not very far. कितने घंटे की है journey from Surat to Ahmedabad? I've never been to Surat, that's why I'm asking. 4 hours? 4 hours should not be much, so you can come down whenever you feel like, or whenever you are in town, you can just get in touch with me and then we can have you over in the studio. Manita, you are from Patiala. Can we sell in the cafe? Yeah, I'm coming to that. I'll give you an option of burgers that you can sell in the cafe. I'll give you a whole menu of the burgers you can sell in the cafe. Good morning, Manisha. You are Rajni ji, you are also from Gurgaon. Gurgaon is too big and commercial. Whenever I go there, I feel like I'm in a different zone, in a different world. It's huge and it's literally not, it doesn't look like a part of being in India. The roads, the tall buildings and everything is just very, very beautiful. My very good friend Chef Nandini is also from Gurgaon. Preeti Gidwani, you're from Kolhapur. Okay, good to have you all from all across India. Shalini ji, I think, is from Dubai. We have some members from Qatar as well. So we will now begin. And Melting Hearts, I will tell you how you can sell these in the cafe. I'll give you points on that. And I'm offering a workshop on discount that is going to teach you the cafe style burgers. Okay, burgers सबके favorite होते हैं. Every age group. It's a very loved recipe, loved food item. More looks aboard. As in, Krupaji from Mumbai, but you do visit Ahmedabad often. Please do come to the studio, come and meet me whenever you are in town. I would love to meet you in person. Now I think we'll move the focus to the workstation and we will start the recipe. I've given you two recipes, two different recipe cards. One is the tzatziki dip and one is the chipotle bean burger. Isha ji from Chandigarh. I have my family in Chandigarh also. The workshop is just starting now, Kalpana. Okay, Sudha ji from Chennai. Guys, for the tzatziki dip, I'm right now taking cucumber, grated cucumber. Cucumber you can grate with the skin or without the skin. Today I have grated it with the skin. आपको इसकी छिलका आप उतार भी सकते हो, आप रख भी सकते हो. इसको कद्दूकस कर लेना है. हल्का सा इस पे सॉल्ट डालना है, 1 पिंच. ओके, जस्ट अबाउट अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट क्यों लगाया है मैंने?
ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर रिलीज होना है वो पहले ही हो जाए और हम उसको स्क्वीज आउट कर दें. I am adding a pinch of salt to grated cucumber so that we are able to squeeze out maximum liquid out of this. Maximum water should be removed before we put this into the dip. Okay, hi Anita ji from Gurgaon, good to know. मीनाक्षी जी क्लास स्टार्ट हो गई. क्लास स्टार्ट हो गई. गेट योर पेन एंड पेपर एंड योर रेसिपी कार्ड रेडी. So I am going to let this rest. Let this rest. आप ये देख रहे हो इसका पानी ऑलरेडी स्क्वीज आउट हो रहा है और 10 मिनट बाद और अच्छे से पानी इसका निकल जाएगा. ठीक है, ये हमने ज़ज़ीकी डिप के लिए किया है. ज़ज़ीकी डिप इज अ ग्रीक डिप विच इज बेस्ड ऑन hung curd. hung curd इंडिया में बोलते हैं. Greek yogurt is the product, is the ingredient with which it is originally prepared. Asha ji from Meerut. Hi Sangeeta ma'am. So guys, anybody knows the difference between Greek yogurt and hung curd? Can anybody tell me the difference between Greek yogurt and hung curd? Guys, hung curd is made with your normal dahi, the normal Indian dahi yogurt. उसको हम मलमल के कपड़े में बांध देते हैं और उसके नीचे ऐसे एक छलनी रख के और उसके नीचे एक बोल रख देते हैं. And that rests for at least 4 to 5 hours or overnight. That is your hung curd. अब आपका योगर्ट किससे बनता है? Your yogurt is prepared as a result of fermentation caused by lactobacillus. यानी कि एक बैक्टीरिया होता है जो दूध में डाला जाता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस. उससे आपका दही बनता है. ठीक है, अब ग्रीक योगर्ट में क्या है? लैक्टोबैसिलस भी है. देयर आर 2 बैक्टीरिया इन दैट. वन इज अ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, यानी कि 2 बैक्टीरिया डलेंगे उसमें ग्रीक योगर्ट में, तो थोड़ा सा वो ज्यादा फर्मेंटेड होता है, थोड़ा सा ज्यादा खट्टा होता है. ओके, आपको अगर आप स्टोर बॉट ग्रीक योगर्ट लाके यूज करना चाहते हो, जैसे एपिगामिया का आता है, वो ले सकते हो आप. अदरवाइज यू कैन टेक योर रेगुलर दही एंड मेक योर हंग कर्ड यूजिंग दैट एट होम. ओके, हंग कर्ड आप घर पे बना दोगे, दही को बांधोगे, या तो आप ओवरनाइट बांध के रख दो. एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तो आपने बांधना ही है. ठीक है, पायल मैम, आई विल शेयर नंदिनीज नंबर विद यू लेटर. Ruchi Mathur, non-veg option, I will give. Hi Reema ji from Nagpur and Poonam Surana from Bangalore. Now guys, let's come to the main recipe for today. That is your Mexican bean burger. You have this ingredient list card with you. Okay. Greek has more protein whey or protein Y. Greek yogurt has more protein. Shalini ji, just specify your query. So guys, you have this ingredient list card with you. So according to this ingredient list card, I am going to start cooking the burger. In a pan, I have taken olive oil. Approximately, you can take 2 tablespoons. Okay, great, Meenakshi ma'am. I'll come back to your query, Shalini ji, later. I'll just complete this recipe. Otherwise, वो confusing हो जाता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. Add in your grated or minced garlic. कुटी हुई गार्लिक डाल देंगे इसमें.
A teaspoon of chopped celery. Chopped celery जो है आपकी, celery इस तरह से आता है, आपको ये leaves लेने हैं तो लेने हैं, it's okay, but what you mainly need to use is the stem. इसके stem में सारा flavor है, all the flavor lies in the stem. Hi Pari, so you will be using the stem of celery. Finally chop it and use it, okay? To this I am adding onion, finely chopped red onion, बारीक कटा हुआ प्याज, अभी ये मेक्सिकन बीन्स पे आ जाते हैं. हाय सोनम, या प्रवीण खन्ना, सेशन स्टार्टेड. यू कैन जस्ट स्क्रॉल बैक अ लिटिल टू बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ओके? अब इसके बीन्स के बारे में बात कर लेते हैं. आई एम यूजिंग दीज होल ब्लैक बीन्स जो ऑलरेडी कुक करके, उसके बाद में सॉल्ट के साथ कुक करके और उसको ड्राई करके इस बॉटल में मिलते हैं, ओके? सो दीज आर द ब्लैक बीन्स यू कैन टेक. ये नहीं है तो आप क्या करोगे, ये मैंने ऑलरेडी भिगो के रखे थे, अब इसका मैं पानी डिस्कार्ड कर दूंगी और इसको यूज करूंगी, ओके? You're from Indirapuram, Ghaziabad. Great. अदरवाइज ये नहीं हो, अगर आपके पास में ये वाले मेक्सिकन बीन्स नहीं है, ब्लैक बीन्स, तो यू कैन यूज योर रेड किडनी बीन्स, जो आपके रेड राजमा आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो. रेड राजमा एज इन योर जम्मू वाले राजमा. हाय सुनीता राजपाल जी, हाउ आर यू? आज सबको मैंने जल्दी जल्दी बुला लिया, किचन का काम सबका खत्म हुआ होगा मुश्किल से, आज सबको बुला लिया. सो दीज आर द रेड किडनी बीन्स दैट यू हैव टू यूज. Just in case you don't have the black ones, use the red ones. They would go equally good. Okay? आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो. Both are very good and authentic. Session has started, Praveen. We did a chit chat, and then the session started. You're from Agra, सुनीता जी. How to use the राजमा? देखो, राजमा अगर आप ऐसे ले रहे हो ना, जो रेगुलर पैकेट में आते हैं, you are going to soak it overnight and then give it approximately like 1 whistle on full gas, then lower the flame, cook it for 30 minutes. 30 minutes से पहले भी अगर आपको लगता है आप कर सकते हो. like you know, it depends from place to place. अहमदाबाद में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है गलने में, यहाँ के पानी के हिसाब से. दिल्ली एंड पंजाब आई थिंक 15-20 मिनट्स शुड बी इनफ, वहां जल्दी पक जाता है. सॉल्ट मैंने ऐड किया है थोड़ा सा, जस्ट लिटिल बिट. हाउ टू यूज द रेड किडनी बीन्स? यू कैन आइदर यूज दिस ब्लैक बीन्स. अगर आप रेड किडनी बीन्स यूज करें तो आप उसको सोक करेंगे, पानी चेंज करेंगे मॉर्निंग में, उसके बाद में उसको नमक डाल के थोड़ा सा विसल लगाने रख दो. 1 विसल फुल गैस पे, उसके बाद में 20 से 30 मिनट. ठीक है? पूरी तरह गले हुए खुले हुए राजमा नहीं चाहिए, एकदम पिसे हुए राजमा नहीं चाहिए, थोड़े से मतलब सॉफ्ट हो जाए, कुक हो जाए, पर शेप पूरी होनी चाहिए. ठीक है? What if you don't get celery? Then you don't add it.
Don't add it in that case. Now is the time to add in my bell peppers. I am adding yellow bell peppers, red bell pepper, green bell pepper, boiled sweet corn, and my black beans, red beans, Mexican beans, जो भी आपके पास हो वो डाल दो. पानी डाल दो. Add in your cracked pepper. ब्लैक बीन राजमा आपको मिल जाएंगे ऐसे अर्बन प्लेटर पे मिलते हैं. ये अर्बन प्लेटर पे दीज आर फर्मेंटेड एंड उमामी. ये आपके मेक्सिकन और इटालियन इवन इन योर एशियन ये जाते हैं. Soumya, do one thing. Just scroll back the video. Scroll back the video. आपको स्टार्टिंग से दिख जाएगा. ओके काली मिर्च मैं इसके ऊपर फ्रेश कूट रही हूँ. यू विल गेट दीज ब्लैक किडनी बीन्स ऑन आइदर बिग बास्केट और ऑन Amazon. ये अभी नीचे थोड़ा चिपकने लग गया. हल्का सा पानी डालेंगे, जस्ट अ डैश, लिटिल डैश ऑफ वाटर इनटू दिस. Because all the flavors are sticking to the bottom of the pan. थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसे कर लेंगे. हाँ, अमेरिकन कॉर्न बॉईल करना. अगर आप पैकेट वाला कॉर्न ले रहे हो, इफ यू आर यूजिंग द फ्रोजन कॉर्न, जस्ट वॉश इट एंड यूज इट. ओके, देन यू डोंट नीड टू बॉईल इट. मीनू जी, ओरेगानो ड्राइड, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश डाल लेना. चिली फ्लेक्स. चिली फ्लेक्स इज ऑप्शनल. ओनली इफ यू लाइक द फ्लेवर या इतनी स्पाइसी आप टॉलरेट कर पाओगे तो ही आप डालना. मेक्सिकन सीजनिंग ऐसे आपको मार्केट में रेडी मिलेगी. आई एम यूजिंग किया. यू कैन यूज एनी अदर ब्रांड ऑल्सो विच इज अवेलेबल टू यू. Depends on what size of burgers you are making, like 2.5 inch, 4.5 inch या coin burgers, तो उस पर डिपेंड होगा. एटलीस्ट अगर आप जैसे 4.5 इंच का बर्गर बना रहे हो तो आपके 4 से 5 टिक्की बन जाएगी इसमें. स्मॉलर यू विल मेक तो ज्यादा बन जाएगी. यू हैड सीन कि मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, सिर्फ अनियन कुक करने जितना. अभी मैंने एडिशनल सॉल्ट नहीं डाला है. गैस को मैंने कर दिया है बंद. ओके, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू अ प्लेट सो दैट दिस कूल्स फास्टर.
ये मास्कारपोने चीज प्रोटीन व्हाइट वाली या रेड वाली परात लाते हैं। बड़ी या रेड वाली परात लाते हैं। Mexican seasoning, okay. If you can take a screenshot right now, else we are going to share the picture. I will be sharing the picture. And otherwise you can ask me later also. So somebody asked me about the cafe style burgers. So all the cafe style burgers I've taught in my burgers workshop, which is on discount today. Okay, which is on discount today. Let me tell you the name of the burgers. Just give me a moment. I just need to send this for cooling down. इसको फटाफट से ना फैन के नीचे रख दो, जितना हो जाएगा ठंडा हो जाएगा. So in the burger workshop we have done crispy veggie burger, which is almost like your McVeggie. Then your cheese meltdown burger, like aloo tikki burger, chipotle bean burger, quinoa patty burger, paneer sliders and Szechuan burger. Also I have taught the market style French fries. So that workshop is for 999. You buy it today, you get it for 799. And you buy it in the next 60 minutes, you get it for 699. Okay, this offer is valid only for today. आप मेरी क्लास खत्म होने के बाद में 60 मिनट्स में पेमेंट करेंगे तो 699, और आज के पूरे दिन में कभी भी पेमेंट करेंगे तो 799. All right, this workshop is on discount for today. Let me combine the other ingredients now. आइडियली आप इसको कढ़ाई में भी साथ में मिक्स कर सकते थे, बट क्योंकि लाइव क्लास है मुझे थोड़ा जल्दी वर्क करना है, बर्गर का मसाला ठंडा नहीं होगा, तो आई एम जस्ट कंबाइनिंग इट इन अ प्लेटर. आपने लेना इस तरह से बॉइल्ड, कोल्ड एंड मैश्ड पोटैटो. मैश्ड ग्रेटेड भी कर सकते हो आप. सो आई हैव टेकन बॉइल्ड, cooled and mashed potato. In goes my grated paneer, 1/4 cup. Yes, I use the steel tri-ply pan. पनीर डाला मैंने इसमें, ग्रेट किया हुआ. सेशन स्टार्ट है मैम, ऑलरेडी सेशन स्टार्ट है. Then some grated cheese. You can take your processed cheese as well. I am taking this grated cheese जो ready diced आता है. To this I'll be adding some corn flour. Melting hearts, I'll give the menu once again in written in the WhatsApp group. Okay. कॉर्नफ्लोर डाल रही हूं मैं इसमें. मसाला फटाफट. अब मैं इसमें मसाला डाल के अब सॉल्ट डालूंगी. ठीक है. आपको कंप्लीटली ठंडा करना है गाइस. नाउ आई विल बी एडिंग इन सॉल्ट.
Just remember that cheese has salt and very little salt I've added to the masala that I was cooking, and even the black beans had some salt. So I'll be going a little careful with my salt. Over नहीं डाल देंगे. छोटो थोड़ी स्लरी बनाओ कॉर्नफ्लोर की, एक कटोरी लो. Now I'll be making the tikkis. I'll make one in the kadhai only. You can make it on you can shallow fry it on a pan, or you can do it in an air fryer as well. ठीक है? Yes, you can use mozzarella cheese. मैंने mozzarella ही डाला है. आप mozzarella processed cheddar कोई भी डाल सकते हो. अच्छा, you already made your payment, Archana ji. I'll see that after the workshop and I'll give you the access. Instead of corn flour, can you use maida? मैदा आप डाल सकते हो, डेफिनेटली डाल सकते हो, बट कॉर्नफ्लावर इज अ लिटिल बेटर. कॉर्नफ्लावर की जगह आप राइस फ्लावर भी डाल सकते हो, उससे और अच्छी और क्रंची बनेगी. थोड़ा सा इससे बड़ा दे, जैसे वो प्लेट टाइप का है ना, जिसमें मैं टिक्की को डिप कर सकूं. I will just check the seasoning, adjust if required, and then we will start making the patties. So it's perfect, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है. I'm going to make a slurry. I am taking corn flour for the slurry. Add in the water. बर्गर का पैकेट खोल देता हूँ बंद से. Guys, whoever makes it today or tomorrow or any other day, don't forget to put it on Instagram and tag me. And let me know what other recipes you want me to teach. You're welcome, Krishna. Yes, Indira, the session has started. एक जगह पे मैंने ये स्लरी बना लिया है. Not a very thin slurry and not a thick one. It's a medium slurry. और मैं यहाँ पे थोड़े अपना ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ. आप रेगुलर ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो. मैंने ये व्हाइट वाले पैन को लिए हैं. अगर आपके पास में रेगुलर देसी वाले ब्रेड क्रम्स हैं, इंडियन वाले, वो भी डाल सकते हो. नाउ बिफोर आई मेक माई टिक्की, आई जस्ट चेक द साइज ऑफ द बर्गर बन. दिस लुक्स अराउंड 2.5 इंच. तो जब भी आप अपनी टिक्की बनाएंगे, पहले बर्गर का साइज देख लेना. अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बन मेक योर टिक्की. बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी एब्सोल्युटली अराउंड द साइज ऑफ योर बर्गर. So just dip this. एक बना के मैं पहले चेक करूंगी, अगर टूटेगी तो I might just add a little more corn flour to the पैटी का पूरा जो मसाला है उसमें.
Make sure you coat the patty really well. Okay. You can take मैदा for the slurry. बहुत गाढ़ा मत बनाना slurry. Vardhini, I am leaving this live on my YouTube channel. Just go and subscribe to my YouTube channel. Breadcrumbs are compulsory. You want the gluten-free option? You want the gluten-free option. फिर आपको skip करने पड़ेंगे. नहीं तो खाली जो क्या डाल सकते हैं gluten-free में? कोई भी gluten-free crackers बना के उसको पाउडर करके उससे लगा लो आप. ऑयल हमारा ठंडा हो गया, एसी चालू है, इसके कारण आपको एकदम फुल उस पर करना है, फुल फ्लेम पे. प्लेट दीजिए. The fee of the workshop is 999. Throughout the day, whenever you buy it today, it's 799. In the next 60 minutes, you get it for, after the workshop, I'll count the 60 minutes, you get it for 699. दूसरी प्लेट. क्रश्ड कॉर्नफ्लेक्स. कॉर्नफ्लेक्स ग्लूटेन फ्री है कि क्या है बताओ दीप्ति? इट्स अ गुड ऑप्शन. With jalfrezi and some gluten free crust. Definitely Payal ji. I'm going to take the gluten free breads class very soon. I'll tell you bakers about how to buy it. Yeah, Neha, you can freeze these patties also. You can freeze them for later use. Number I'll share on the group. I'll share on the group after the workshop. ये उठा लेना, इसे बाद में बनाते हैं. उठा ले. I'm sharing the number on the WhatsApp group where you can make the payment. Okay, Shikha, are you able to join? I can see that you've written in the WhatsApp group that you are not able to join. If there is an issue, let me know. Kamaldeep ji, we are talking about a pre-recorded burger workshop. That's a cafe style burgers workshop where we have covered a number of burgers like your crispy veggie burger which is the McVeggie, then cheese meltdown burger, Mac aloo tikki burger, chipotle bean burger, quinoa patty burger, paneer sliders, Szechuan burger, and the market style French fries are also taught. This workshop is for 999, but today you get it for 799. And for the next 60 minutes you get it for 699. ये थोड़े से पत्ता निकाल के 2 पत्ते निकाल देते हैं. Make sure you make it really crispy because burger के अंदर की जो पैटी है वो आपकी बहुत crispy होनी चाहिए.
अगर आप उसको तवे पे भी कर रहे हैं ना, तो जस्ट मेक श्योर उसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उस पे करें, पैन पे या तवे पे, जैसे शैलो फ्राई करें. Just let it be really crisp. The crust should be very crisp. Are you doing it in the air fryer? That can also be done. The recipe would be available on YouTube, Seema Mishra ji. You can access it anytime later also when you are preparing it. Just access it anytime. All right. In the meantime, मैं अपना बन कट कर लेती हूँ. टिश्यू बोल देना है. बटर देते हैं. So this is very nice and crispy. I'm taking it out. You can see the lovely golden brown color of the patty. I'll just make a quick tissue too. Single bit. Now into this hot oil, I'll just add some French fries and fry them. उनको मैं भी पीछे रख देती हूँ क्योंकि अब हम अपना बन सेक लेंगे. Apply butter. One more recipe is left, Kalpana ji. We have to do the tzatziki dip, and that's a very quick one. In air fryer, you have to keep approximately 200 to 220 degrees, and it will take 35-40 minutes. Make sure you preheat it, and just these days you're getting those liners also for the air fryer. You can grease that liner and place your tikki on top of it, drizzle some oil or spray some oil again on the tikki, and then air fry. French fries निकाल लो. Apply some chipotle mayo. Don't store them after frying. If you really want to store them, what you can do is just put them in hot oil. निकालो, तुरंत निकालो, क्रिस्पी मत करना. निकाल लेना और उसके बाद में उसको पूरा कूल डाउन करके फिर फ्रोजन उसमें चेंबर में रख देना. Lettuce leaves.
लेटस आपको दूसरा लेना, आप लोलो रोसो भी लगा सकते हो इसमें। मैं आइसबर्ग लगा रही हूँ, नॉर्मली आइसबर्ग ही लगती है, आप रोमेन या लोलो रोसो भी लगा सकते हो। Slices of red onion and tomato. Just sprinkle a pinch of salt so that the vegetables don't, you don't feel कि ये फीका फीका है. And I'm adding one piece of pickled jalapeno also. So this is a store bought bottle में से मैं निकाल रही हूँ ये. 1 or 2 pieces. This again is your choice. आपको नहीं अच्छे लगते pickled jalapenos तो आप नहीं डालना. Cheese slice. So I think ये तो गर्मी के कारण पूरा का पूरा मेरा cheese slice melt हो गया है. You need to put a cheese slice on this. So I'm not putting this right now because ये पूरा melt हो चुका है. But you have to put a proper which is not melted. Just take it out of the refrigerator that time. एक olive दे दे वहाँ के फ्रिज में. Flame should be medium for tikki and burger. See, burger तो आप full flame पे भी कर सकते हो, लेकिन टिक्की के लिए मेक श्योर कि आप उसको क्रिस्पी कर रहे हो, तो आप मीडियम टू हाई के बीच में रख सकते हो. ठीक है, स्लो पे नहीं करना, मीडियम टू हाई के बीच में आप कर सकते हैं. ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? देयर आर लाइनर्स, आई विल गिव यू द लिंक. पायल जी, देयर आर लाइनर्स अवेलेबल फॉर putting inside your air fryer so that the base does not get spoiled. I applied butter on the buns, Rekha ji. Simple Amul butter, salted butter. Oats flour can be used instead of bread crumbs. You can use oats flour, yeah, it's a good option. You can use it. Does it come crispy if you only shallow fry? Yeah, if you shallow fry it तो बहुत अच्छी crispy होगी. आप देखो ये रोड साइड जो स्ट्रीट चाट वाले होते हैं, what they are doing, they are shallow frying the tikkis on the tawa. तो वो कितनी अच्छी crispy बनती हैं. तो whenever you try it at home also आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी. बट आप ऐसा करना, take your iron तवा, लोहे वाला तवा लेना, बहुत अच्छी crispy shallow fry होके निकलेगी. Just for the visual beauty, मैं इसके ऊपर एक ऑलिव लगा रही हूँ. You could even put a cherry tomato or a green olive. So your burger you will serve along with some wafers or with French fries. I'm serving it with French fries today. I'll just have my workstation clean and I will teach you the tzatziki dip. Okay,
the tzatziki dip. I've given you the recipe card, guys. You all can see the recipe of tzatziki. लिखने में TZATZIKI आता है. Both the T's are silent. It's not a tzatziki, it's a tzatziki dip. बहुत सारे लोग इसको tzatziki भी बोलते हैं. So I explained you कि आपको hung curd कैसे करना है. कपड़े में आप चीज क्लॉथ में यानी कि मलमल के कपड़े में आप बांध के रख देंगे दही को. So I've taken 1 cup of hung curd. What is the difference between mayo and spread? Mayo is plain mayo. That's one of the mother sauces, अर्चना जी. Mayo को आप एक mother sauce में गिनोगे यानी कि it's a base recipe for various other sauces. उसके अंदर आप 10 तरह की चीजें बना डाल के अलग अलग टाइप की मेयो या स्प्रेड्स बना सकते हो. Like your Thousand Island, like your Chipotle Southwest or your Sriracha mayo, chili mayo, mint mayo, तंदूरी mayo. So that is a base. उसके अंदर जो ऐड किया उससे आपकी वो टाइप की स्प्रेड बन गई. ठीक है ना. So I have taken hung curd. ये कैसे बनाया ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आपको ओवरनाइट दही को बांध के रखना है कपड़े में. और dill leaves अकेला के आप लोग चीज स्लाइस जरूर लगा लेना. माय चीज स्लाइस इज ऑल गॉन मेल्टेड, सो आई एम नॉट एडिंग. इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास मैंने ग्रेटेड क्यूकम्बर के अंदर नमक लगा के रखा था. इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन आई हैड अप्लाइड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द grated cucumber that I have. Okay, I put it in a cotton cloth. You can take a cheesecloth, put it on top of a colander और इस तरह से इसको squeeze out कर लो पूरा इसके अंदर से liquid. जितना पानी निकाल सकते हो निकाल दो. ठीक है. It is very yummy. It is honestly it's very yummy. Not because I have made it, but it is very good recipe. Veg mayonnaise. Definitely, Rashna, I'll come up with a veg mayo recipe. आप लोग मुझे Instagram पे follow करो. I keep on sharing the reels, recipes, and even I keep on sharing the updates of my workshops. So that way, you know, you'll always be updated कि क्या हो रहा है, हम लोग क्या सिखाने वाले हैं. And accordingly, you can put in your request also. अच्छे से मैं इसको निचोड़ दूंगी cucumber को, and then put it in your hung curd. hung curd के अंदर डाल देंगे हम ये. प्लैटर पूरा कैसे लगाना है वो मैंने दिखाया था Instagram लाइव में. So how many of you were there in the Instagram live day before yesterday? आप में से कौन-कौन ने लाइव ज्वाइन कर रखा था Instagram live for the tzatziki dip and lavash? जिसने ज्वाइन किया था तो उन्होंने वो प्लेटिंग मैंने कैसे की थी वो देखा होगा. You can follow that. Otherwise I'll send the pictures also कि आप कैसे इसको प्लेट करोगे. hung curd, cucumber, a teaspoon of minced garlic. अच्छा आप ये हटा भी सकते हो. those who are Jain they can remove this. और इसमें मैं दिल डाल रही हूँ. दिल यानी कि सवा के पत्ते, DILL. दिस इज सुआ सवा. दोनों नाम से इसको जाना जाता है. ठीक है. या सोया के पत्ते भी बोलते हैं. very healthy. it boosts metabolism and it is also very good for fertility, for eyes. ये चॉप किए हुए दिल के पत्ते हैं जो मैं इसमें डाल रही हूं. Salt, cracked pepper. Okay, Krishna, you were there.
So that's the same recipe that we are doing today because the voice was not clear. So I'm teaching the same recipe today. This is your cracked pepper. Olive oil. Cayenne pepper. CAYENNE. Cayenne pepper. क्योंकि ये एक ग्रीक डिप है तो इसमें मैं कैन पेपर डाल रही हूँ. इफ यू डोंट हैव कैन पेपर, डोंट पैनिक, डोंट गो अबाउट द एंटायर टाउन फाइंडिंग इट. यू कैन जस्ट ऐड योर सिंपल पेपरिका और या सिंपल घर का लाल मिर्च का पाउडर हल्का सा. ओके I'm going to check the seasoning. Little bit salt I'll be adding. And little bit of garlic also I'll add. थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है ये फ्लेवर. मैं थोड़ा सा garlic और ऐड कर रही हूँ. And it's a perfect summer dip with all the cucumber and the beautiful herbs. See, there's no mayo, no cream in this dip. It's a healthy one. It has only hung curd. You will have it with your pita bread, with your lavash, with any crackers, with breadsticks, with some French fries, with salad sticks, with olives, cherry tomatoes, anything you can dip in this and have it. Okay, if you don't like the flavor of dill, then you will add either parsley or thyme or cilantro. Any of these three. ठीक है? मक्कई का सूजी. मीनू जी मैंने आज इसमें बिना पील किए क्यूकम्बर यूज किया है. आप पील करके भी यूज कर सकते हो, आप छिलके के साथ भी यूज कर सकते हो. ठीक है? So now I'll be just plating it up. थोड़ा सा अंदर मैं इसके अंदर खड्डा बना रही हूँ ऑलिव ऑयल डालने के लिए. Drizzle some olive oil here and very little cayenne pepper, and we'll be serving it with lavash क्योंकि पीता ब्रेड्स जो हमने इसमें लगाए थे those are all over now because day before yesterday when I prepared it, it was just, as I told you, it was all gobbled up in minutes. So today I'm doing a very simple presentation of this. That day I had set up an entire platter. So just that you don't miss the dip recipe, I have prepared it again for you. So that's the tzatziki dip. Okay, the Greek tzatziki dip, hung curd. No cream, no mayo, no unhealthy ingredients, only healthy. So Swajal, can we move the focus to myself? Yeah, you are already using black pepper. Black pepper का आप डाल ही रहे हैं. अगर आपके पास cayenne pepper नहीं है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च का पाउडर डाल लीजिए. और chat box खोलो. Any queries, guys? Any questions you want me to answer? You join me on Instagram. Why Greek yogurt has more protein than the normal yogurt?
Obviously, when you are using a different kind of milk, a different source of milk, because see, the Greek yogurt is not made only with cow's milk or only with buffalo milk. It is made with a combination of, they're using goat's milk, they're using cow's milk and buffalo milk, and it is an enriched milk. So you cannot compare it with the Indian quality of dahi or milk. That is why it will always give you a greater protein. Thank you so much, Preeta ma'am. Really, it means a lot. Happy with the audio for the student. Thank you so much, and I love you too. And it was great to teach you all today. Please do try the recipes. Let me come up with the offer again. 60 minutes. Next 60 minutes you have the offer where a workshop of 999, you're getting it for 699. After that, till the evening, till night, it is going to be 799. Okay, and many of you missed the dip platters workshop discount also because the audio was not clear. So that's a 1499 workshop which I'm giving it to you today for 999, only for today. Only for today you get the dip platter workshop where I have taught 14 different kinds of dips, all their different presentations, and even what crackers will go with what dips. So they're Asian dips, they are French, Italian, Mexican, and I think there's a Lebanese also. Mediterranean dips are also there. So that's also a very, very good class. You can buy both these workshops today at a discount, the cafe style burgers, and you can also buy our dip platter workshops. Thank you so much, Manita. Thank you everybody for joining in. What dip will go with the Mexican bean burger? Already we have added the chipotle mayo inside. You don't need a dip with this. और normally जो ketchup चलता है वही आप serve कर सकते हैं. For the air fryer, 200 degrees, 30-35 minutes minimum. ठीक है. Thank you Reema. Thank you Vaishali ji. Thank you Krupa ma'am. Thanks a lot for your lovely words. So if there are any queries, I will wait. Otherwise, we will log off. We are going to end the session today. And one more thing. I am coming on 22nd, 11:30 same time. I'm coming on 22nd. That is Saturday. I'm coming with a Black Forest pudding. Black Forest pudding recipe. That's again a free session, guys. I'm going to put up the updates for that workshop today. Alright, thank you everybody. Shweta, thank you Shalini ji, thank you Neha Shah. You can call me, just get in touch with me if you really want to come to the studio. We can work it out. Thank you Ruby Bajwa, thank you Davinder ji. Thank you so much for your lovely words. And bye-bye and take care everyone. So we'll be ending the session here. I think queries nahi hai, so we are going to end the session. Swajal, can we just end the streaming? OTP. कहाँ से आए?